नमस्कार। एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 2010 में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। 2009 में जी बिजनेस ने जब आपको इस समिट से रूबरू कराया था तब देश के हालात कुछ और थे। देश में सूखे का माहौल था, किसान परेशान था और सरकार हैरान थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बेहतर मानसून ने कृषि पैदावार बढ़ने की संभावना जगा दी है, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर चिंताएं अभी बनी हुई है। इसी पर एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन की ये खास पहल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 2010 काफी अहम है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा को लेकर जानकारों की क्या चिंताएं और राय है। Rural youth are no longer interested in farming. Our farms are yet to be effectively linked with the FOG. There is still not political consensus on major policies like land reforms, marketing reforms, food banks, credit support and so on. And there is no governmental initiatives on some of the major crucial issues. But yet there is greater confidence today in rural areas. There are more work opportunities than ever before. But one thing which Indian agriculture lacks most visibly is the leadership. The sector needs role models and to some extent an element of glamour to attract youth and educated people to engage. I believe farm should get more profits, which can be done only by proper pricing policy and by effectively linking farms with the markets, which has been so much emphasized in the National Commission on Farmers report, which was done by no other than Professor M. S. Swaminathan himself. We therefore urge the government through the member of the Union Cabinet, Sri Subodhkant Sahay ji, to kindly take up with the Cabinet for its acceptance and total acceptance of the National Commission of Farmers report and its early implementation. The achievements in farm sector need to be discussed and persons playing seminal roles need to be recognized to inspire to take the positive straight forward. The Agriculture Leadership Summit starting today aims to serve this objective. Thank you very much. Thank you, Varun. We know in India, even 1 degree centigrade mean temperature, higher temperature, particularly night temperature, will reduce the wheat production in northwest India by 6 to 7 million tons. So a rise in temperature has great implications for food security, for livelihood security, for water security. Water will become a problem. So how do we start adapting ourselves and how do we contribute to mitigating climate change? To the extent we can, our government has made commitments that they will reduce our own contribution to carbon emission very considerably. But in the case of agriculture, I have been suggesting to ICR and government that we have 128 agroclimatic regions in the country. In each one of these agroclimatic zones, we should establish a climate risk management research and training center which will prepare the people in that agroclimatic zone to adjust themselves to new situations. More new situations like drought, floods, higher temperature, and also many times you can also take advantage of a higher carbon dioxide in the atmosphere, particularly for greenhouse horticulture. So how do you adjust yourself, both positive and negative, in terms of climate change? These 128 research and training centers, they should train in each panchayat 1 woman and 1 male member as a climate risk manager, who knows a drought code, a flood code, a good weather code. The aim of these centers is to maximize production in good seasons and minimize the adverse impact of abnormal or unfavorable seasons. Thank you. अब ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आवश्यकता है काम करने की और देखने की, पैदावार बढ़ाने की, किसान का घर पूरा करने की, उसको इज्जत देने की, और उसके लिए जरूरी है कि हम उसके लिए क्या करते हैं। किसान ने इस देश को इज्जत दी है। किसान ने हमारे हाथ से वो मांगने वाला बर्तन फेंक के और हमें आजाद कराया है। मैं तो ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, हम तो एक्सपोर्ट किया करते थे। ये एक्सपोर्ट में से बना हुआ भी एक्सपोर्टेड ग्रेन्स, आई एक्सपोर्टेड wheat, I exported cotton, sugar, and then other things.
तो ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ किया है। महान होना चाहिए हिंदुस्तान को, भारत को, कि किसान ने उसको इज्जत दी है, उसको मान दिया है, सम्मान से लोगों के साथ खड़ा होने की हिम्मत दी है। PL 480 की उस मांगने वाली हालत से निकाला है। आज आप लीडर लोग इकट्ठे हैं यहाँ, देखने के बाद हम किसान को हिम्मत और कैसे दे सकते हैं, उसकी आमदन कैसे बढ़ा सकते हैं।